So अगर हम लोग को DJ को project बनाना है, then what is the first step? So let us just create a folder. So let me just create a folder. Okay, एक simple सा folder create करते हैं like Django project. Okay, whatever आपको जो भी नाम रखना है. So मैंने यहाँ पे folder create किया ना. What is my next requirement? मुझे इस folder को open करना है and in the command like in address bar I just type cmd. So in short, at anyhow I want to actually navigate to that particular like project, okay, to that particular folder. So मैं वहां तक पहुंच गया. Now after that, what is my next requirement? Yes, anyone? अब क्या करना है हम लोग को guys? यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है? Yes, Django admin and अगर कमांड भूल गए तो प्लीज एंटर करिए. तो आप लोग को यहाँ पे कमांड मिल जाएगा. So what we have to write down, Django admin start project and whatever the project name you want to add. Okay, so ये मेरा first project है, otherwise हमारा quiz app है. Okay, so that is like let us just write out that's the first project. That is first project. So after that, what will happen? After this command, what will happen? हम लोग एक बार conclusion कहीं पे लिखते जाते हैं. Okay, so our first command is actually Django admin, then start project and end the project. That's it. That is our first step. Okay, after that, what is the next step? What is the next step? Just check the folders जो इसके अंदर बने हुए वो folders एक बार check कर लीजिए. So there are actually first project is there, some configuration files are there, and manage.py file is there. Okay, some configuration in the sense some settings.py, urls.py, ASGI and WSGI and something like that. Okay, so ये automatic generate होगा. We have not to worry about that. Now next thing is अब मुझे उस project के अंदर work करना है. Okay, so what I will do, just navigate to that project. So like cd first project. Okay, तो उसके अंदर navigate करिए. So my next command will be cd and project name. What will be the next? अब मुझे कुछ application develop करनी है. अब मुझे application develop करनी है. So what I will write down, manage.py start app and your application name. So my application name is quiz app. Okay, मुझे application का नाम रखना था quiz app. So just write down here manage.py start app and whatever the application name you have. So like that's application name. Okay, so that's that. So now after this, what will happen? After this, actually in first project folder, you will have one more folder that is actually quiz app. Guys, just observe one thing. यहाँ पे मेरे पास सिर्फ तीन चीजें हैं. We have first project, we have quiz app and manage.py. अभी right now तीन. आज की command के बाद यहाँ पे एक और चीज generate होने वाली है. So वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं. But right now we have only three things inside your first project. Okay, so first project, inside that I have first project, quiz app and manage.py. Let me open this like manage.py. So in that we have some files and one folder that is migrations. So in migrations, I have one file and that is a 0kb file. That means what? It's an empty file. Okay, let me just try to open that so it will be more clear. So that's an empty file. Okay, so मैं इसको आज इसलिए open कर रहा हूँ because इसमें भी कुछ changes आने वाले हैं. So that in my application, in my quiz app, actually I have actually some files and migrations for. Is it clear to everyone, guys? अभी तक हम लोगों ने क्या काम काज किया? We just create a project. Inside that project, we just create an application. यहाँ पे किसी को problem up to this? Okay. So now what is our next requirement? अब मुझे ऐसा करना था कि सर अगर कोई project run करे, then what will be the output? So how to, first of all, अगर आपको project run करने का is, then you are just trying to develop the website or web application. Then you require a server. So first of all, let me just start the server. So for that you have to just write out manage.py and run server. जैसे आप XAMPP और XAMPP के लिए उस पर double click करके उसको execute करते हैं. In the same way here we have to just fire the command manage.py run server. अगर आप अपने project को check करना चाहते हो या execute करना चाहते हो, because you are just trying to develop the application, sorry, web application or website you are just trying to develop. So web application or website कहाँ पे run होगी? सर browser. So browser is a client, but we need server over there. तो server कैसे बनाएंगे? So guys, server Django खुद provide करता है. So what we have to write down to launch the server, to start the server, you have to just write down manage.py run server. Okay, and this command is to start server. Okay, and एक और command हमने इसमें देखा था कि अगर आप port number change करना चाहते हो, then guys you can just write down manage.py run server and the port number. Okay, but by default port number is 8000. What is my next requirement? Sir, my next requirement is I want to check the server is working or not. So guys, to just cross verify that your server is like running or not, you have to just copy this thing
Okay, and just paste that one in a browser's address bar. Otherwise, just write down localhost colon 8000. Okay, either you can just write down 127.0.01 slash sorry colon 8000. You can just write down. Otherwise you can just write down localhost colon 8000. Okay, प्रोसेस अगर बहुत ज्यादा चल रही है just press the close है. Okay, प्रोसेस को interrupt कर दीजिए. You will get the home screen of the DJ. You will get the home screen of the DJ. That's it. So how to start the server? Okay, how to start the server? तो हम लोगों ने वो भी किया. How to start the server? So you have to just write down manage.py and run server. ये steps हम complete कर चुके हैं. Now another thing is like मुझे check करना था. Otherwise how to open a home screen of Django. So what I have to do, what I virtually have to do, guys? Start browser. Browser start करके उसमें मुझे क्या लिखना है? Just write down localhost colon 8000 or 127.0.01 colon 8000. That's it. Okay, so you will get the home screen of the you will just get the home screen of the like the Django server. That's it. Now after that, what is my requirement, sir? मुझे actually home screen नहीं चाहिए ना. I want something else. मुझे अगर यहाँ पे किसी ने इस तरीके से request किया localhost colon 8000, what is our application name? Sir, my application name is Quizlet. तो अगर किसी ने लिखा quiz app, तो कुछ output आना चाहिए. So I want some response from my application. Okay, so मुझे मेरे application का कुछ response चाहिए. So for that, what we will do, just open your quiz app folder. So in this first project, just go to quiz app folder and open views.py. Okay, so view actually just used to generate the views. Views अगर आपको MVC model पता है, model view and controller. So this is the view part. View part मतलब जो user को दिखेगा, okay, जो user को show होगा, वो सब कुछ code आपको यहाँ लिखना है. Just open the view part. Okay, just open the views.py and just define some function over here. So let me define a function. नाम कुछ भी रख सकते हैं. That's my first method. So just write down first method, but request is an argument. Okay, why request? Because जब भी आप Django के through request करोगे, मतलब client जब भी Django server को request करेगा, client जब भी Django server को request करेगा, तो Django actually will call any method of your views.py, मतलब जो आपने map किया, अभी mapping नहीं देखा हमने, but उसको call करेगा and will pass request as an argument. Okay, so आज हम लोग को request का सबसे पहले run करना है. So right now just define the method. Why we are just defining the method? Because we want to just write our first view. Okay, so like write first view. So उसके लिए मुझे क्या करना है? Just open quiz app, inside that views.py file and define the function. Define one function inside that. Okay, so what will be the function? आप नाम कुछ भी रख सकते हो. My function is actually my first function. Okay, which भी आपकी मर्जी. आप like एक हो सके तो like कुछ meaningful नाम use करेंगे. जैसे मैंने first लिखा, but it's not meaningful. But right now just ignore that. And what is the next requirement? Just write down something like return hello world. Okay, but ये जो आप यहाँ से return करोगे guys, वो आप किसको मिलेगा? That will be forwarded to Django, or Django actually इसको browser कर देगा. But browser cannot directly display the hello world. Actually, browser can understand HTML only. So what we have to do, we have to use HTTP response class. We have to use to generate the static response. Okay, directly HTML response अगर आप generate करना चाहते हो, then you have to use HTTP response class. But to support this class, we have to import a module that is HTTP. Okay, that is django.htp. From that, you have to just import HTTP response. So what I write down from django.htp, just import HTTP response. And I used that HTTP response. So just define this thing. Okay, so just write down this thing. मैं फाइल इसलिए बना रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपको ये यूज करना हो तो आपको स्टेप्स मिलते हैं. Okay, so that's that. So हम लोगों ने अपना फर्स्ट व्यू लिखा, but फर्स्ट व्यू के लिए ये पहला स्टेप था. ये पहला ऐसा फंक्शन बना दीजिए. After that, a second step is, yes, anyone? Second step क्या होगा? First step is done. Okay, अब हम लोग को ये पता है कि जब भी रिक्वेस्ट प्लेस होगी, जब भी आपको रिक्वेस्ट प्लेस करेगा कोई भी, मतलब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट प्लेस करेगा, so actually रिक्वेस्ट कहाँ पे फॉरवर्ड होगी guys? Actually request कहाँ पे फॉरवर्ड होगी? So request will be forwarded to Django. Okay, and Django उस रिक्वेस्ट का क्या करेगा?
डीजेंगो उस रिक्वेस्ट का क्या करेगा, उसको एक्चुअली आपकी जो भी एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट आई है पहले वो चेक करेगा। ओके, सबसे पहले वो चेक करेगा दैट एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड इन योर एप्लीकेशन और दैट एप्लीकेशन इंस्टॉल योर इन योर प्रोजेक्ट और नॉट। ओके, सो फॉर दैट जनरली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे ये तो कर दिया, बट जब आप कीज ऐप के लिए रिक्वेस्ट करोगे देन फर्स्ट वी रिक्वायर्ड और कीज ऐप इज इंस्टॉल्ड और नॉट। देखो स्टिल वो यहाँ पे राउंड राउंड घूम ही रहा है। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्विज ऐप, so actually quiz app is installed or not, Django didn't identify up to this. Okay, it's cannot identify that quiz app is installed or not. So what we have to do, आपको ये फर्स्ट व्यू के लिए ये तो करना ही है, you have to define the function, but now like declare application in project or just inform Django that my application name is quiz app. Okay, so for that what we have to do guys, so this is the sub part, so that is the first subpart and this is the second subpart. Okay, this is the second subpart. So मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, just open settings.py फाइल। कौन सी फाइल मुझे ओपन करनी है, settings.py। अब ये फाइल कहाँ पे है, so just go to the first project, that is your project name, inside that first project folder is there, in short जो settings फाइल थी, जो configuration फाइल थी पूरे प्रोजेक्ट के लिए, just open that and inside that settings.py is there। Okay, inside that settings.py just open this file। okay, just open this file। तो हम लोगों ने कहां से फाइल ओपन की guys, let me note it down। हमने कहां से फाइल ओपन किया, okay, हमने ओपन किया ये first project, in short whatever the project name is there, so project name slash settings.py। okay, just open this and इसको ओपन करने के बाद आप सर्च करिए installed application। okay, now in installed application list, oh in short ये जितनी भी एप्लीकेशन है all these are by default installed in our project। okay, तो ये गिफ्ट है हम लोग को Django की तरफ से। just declare your application name। okay, यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का नाम लिख दीजिए कैसे। okay, just declare your application name over here। so you have to just do this thing। okay, so that's that, I hope that is also clear। so हम लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। now just restart the server and let me check कि कुछ काम हो रहा है कि नहीं। okay, so like let me just restart the server। so हम लोग रिस्टार्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, मैंने पहले कंट्रोल सी प्रेस किया। now after that I just write down manage.py and run server, manage.py and run server। okay, now let me once again refresh this। okay, refresh in the sense what, मैंने यहाँ पे लिखा localhost 8000 and after that मैंने यहाँ पे लिखा quiz app, that's it। okay, so now let me check कि क्या आ रहा है। still it's working, so मैं क्रॉस प्रेस कर रहा हूँ। okay, ठीक है, यहाँ पे क्या quiz app। so अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा ना गाइस तो ब्राउजर पे नहीं देगा, काफी टाइम प्रॉब्लम हम लोग को कमांड प्रॉम्प्ट पे देता है। okay, so just check this thing, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। okay, so it's working but within a short time you will get out। but now one more problem is there, सर जब क्विज ऐप में जाएगा, in short quiz app is right now installed, one more thing is remains, that is कि आपको अपना जो ये फंक्शन है, आपको जो अपना फंक्शन है उसको आपको मैप करना पड़ेगा with given URL। okay, with given URL you have to map that thing। so let me just do one thing, that is my third step, and third step is actually like map function in urls.py file। okay, so what is in urls.py file, ये मुझे कहाँ मिलेगा, so that thing you will get from your project name। okay, so just open the project name and यहाँ पे settings की जगह मुझे क्या मिलने वाला है, urls.py। so just open that thing and here we have actually urls.py। तो once again open कर रहा हूँ first project और first project के अंदर first project and here we have urls.py। just open that and click on this edit with Notepad++। okay, now here in this you have to just declare one more path object। okay, so path and यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे क्या करना था सर, क्विज ऐप के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट करे, जैसे एडमिन के लिए कोई रिक्वेस्ट करे तो कहाँ नेविगेट करना है, सो यू हैव टू नेविगेट ओवर हियर। बट अगर क्विज ऐप के लिए किसने रिक्वेस्ट किया ना तो उसमें मुझे एक्चुअली मेरा फंक्शन कॉल करना है। व्हिच फंक्शन यू वांट टू कॉल सर, आई वांट टू कॉल दिस फर्स्ट मेथड। I want to call this first method,
but ये first method है कहाँ पे? Sir, it is inside the views. It is inside the views. Just check what is the name of this file. The name of this file is actually views. Okay, इस file के अंदर था. Name of this file is actually views. So मैंने इसलिए specify किया views.py. But where is that views? So sir, that views is from actually like quiz app. Okay, so from quiz app import views file. Okay, from quiz app import views file. Okay, so now let me just restart the server. Let me just restart the server. Okay, and let me check your अपना task हो रहा है. Okay, so that's that. So now let me refresh this. So now guys just got now we have actually hello world as an output. We have hello world as an output. Is it clear to everyone, guys? यहाँ पे किसी को problem? So that is how to write down your first view. These are the steps how to write down your first view. Is it clear to everyone or any problem? Nidhi, Yash, Jyoti, Muskan? No, sir. Okay, done. Guys, किसी को problem? Still I'm asking. No, sir. Okay, so now next thing is our view is done. मतलब first view is done. Okay, ज्यादा तो कुछ नहीं, हम लोगों ने simple एक view लिखा जिसमें hello world print हुआ. Now what is my requirement? I don't want to like do only this thing. Like मुझे सिर्फ hello world तो print नहीं करना. अब मुझे क्या करना था? Sir, now I am like little bit of curious कि sir ये request का मतलब क्या? What is the meaning of that request? And why this request is useful? And इस request के अंदर आएगा क्या? So guys, ये request actually कौन pass कर रहा है? Sir, Django. Django data कहाँ से ला रहा है sir? Client के पास. In short, Django is an intermediator. Django is an intermediator between our Python code and a client. Okay, so client जो भी data हम लोग को pass करेगा, first of all that data will be passed to Django, and Django, in short, it's a just say that it's a courier boy. Okay, now it's an intermediate guy. So वो हम लोग को वो data हम लोग को pass करेगा. In short हमारे function को pass करेगा. अब कौन से function को pass करेगा वो सब कुछ हमने यहाँ पे note down किया है. Okay, वो सब कुछ हम लोगों ने ये URLs के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी ने विजिट के लिए रिक्वेस्ट किया then just run this method. Okay, किसी ने admin के लिए रिक्वेस्ट किया then just run this case. Okay, so ये अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, but that's the thing, वो URL patterns का check. But now the thing is, sir, still मुझे ये नहीं पता चल रहा what is this request. Then guys, you can just do one thing. You can just do one thing. Okay, you can just do one thing. आप यहाँ पे एक ऐसा काम कर सकते हो, like अगर आपको रिक्वेस्ट के लिए कुछ हेल्प चाहिए, so just do one thing, पहले रिक्वेस्ट को प्रिंट कर. तो भाई रिक्वेस्ट तेरे पास आ क्या रहा है? ओके भाई रिक्वेस्ट तेरे पास आ क्या रहा है, मुझे ये तो बता तू है कौन. सो मैंने नॉर्मल प्रिंट किया, तो ये प्रिंट का आउटपुट कहाँ पे आएगा? बट ऑब्वियस दैट विल बी ऑन कंसोल. या कंसोल के अंदर वो आउटपुट आएगा. ओके, दैट्स इट. ये कंसोल के अंदर आउटपुट आएगा. नाउ जस्ट सेव दिस. जनरली हम लोग को सर्वर रिस्टार्ट करना होता है, बट आई एम नॉट रिस्टार्टिंग. सिर्फ इसको रिफ्रेश करो. ओके, सो अगर आउटपुट नहीं मिल रहा देन यू हैव टू रिस्टार्ट द सर्वर. सो जस्ट चेक आपको आउटपुट मिला कि नहीं मिला. सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग. मैं पहले सर्वर रिस्टार्ट कर देता हूं, सो इट विल बी मोर क्लियर, बिकॉज़ वहां लाइन थोड़े मिक्स हो गए थे. So up to this there are out. Okay, up to this मतलब लास्ट में कंट्रोल ब्रेक तक हमारे पास आउटपुट आया है. Now let me refresh this. So let me check आउटपुट में क्या चीज आ रहा है. Still प्रोसेस हो रहा है. इतना टाइम नहीं लगता जनरली. मैंने एक्चुअली सर्वर क्लोज किया बिकॉज ऑफ वो टाइम ले रहा था. ओके, दैट्स दैट. सो जस्ट ऑब्जर्व दिस गाइस. यहाँ पे आपको कहीं पे आउटपुट में कुछ मिला? सो गाइस दिस इज द आउटपुट. ये आउटपुट था जो हमने रिक्वेस्ट को प्रिंट किया ना, तो ये आउटपुट मिला. These are by default get request is there and quiz app http 1.1 200 instance status code just display etc thing. Actually हम लोग को ऐसा कुछ आउटपुट मिल रहा है, बट मुझे एक्चुअली इससे पता नहीं चला कि सर आउटपुट this is the output or what. Okay, so what I'm doing, मैं इसके आगे कुछ मैसेज दे देता हूँ. This is request object. Okay, मैं कुछ मैसेज प्रिंट करता हूँ, तो मुझे ज्यादा बेटर पता चले. एंड यहाँ कुछ मैसेज दे देते हैं कि एक्चुअली आउटपुट आया कितना है. Okay, so before and after. So now let's refresh the server, refresh our page. So it's not working, so just restart the server. Just restart the server and once again run this.
Okay, so now just check. So this is the output guys. This is before message, this is the output, this is the output कि भाई ये get request के लिए work कर रहा है and quiz app नाम की request and after. So in short actually जो हमारे पास ये request था, just check. Okay, ये तो server का एड्रेस है, just ignore that. ये तो server का एड्रेस है, but ये जो मेरा request था, ये जो मेरा रिक्वेस्ट था वो पूरा रिक्वेस्ट एक्चुअली मेरे रिक्वेस्ट नाम के बंदे के पास गया। ये पूरा रिक्वेस्ट मतलब जो भी यूआरएल था, जो पूरा यूआरएल था वो एक्चुअली पूरा रिक्वेस्ट के पास गया। सो इन द सेंस अगर मैं यूआरएल चेंज करूं, अगर मैं यूआरएल में ऐसा लिखूं लाइक क्वेश्चन t1 इक्वल टू 12 या 10 and t2 इक्वल्स टू 40 and let us just say t3 is equals to 50 and if I just press enter then what will happen? अगर मैंने ऐसा कुछ डेटा दिया देन ये सब कुछ एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास टोटल डेटा पास होगा क्या? Okay, so actually let I just once again run this. 1 minute. Okay, so just check guys, हमारे पास अब डेटा कितना आया है? हमारे पास अब डेटा कुछ इतना quiz slash t1 equal to 10, t2 equal to 40 and t3 equals to something. In short, I mean to say कि जो भी आपका URL होगा, वो टोटल URL एक्चुअली दी जाएगा, वो टोटल URL एक्चुअली दी जाएगा इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास का। मतलब क्लाइंट ने URL में जो भी चीजें लिखी है, राइट नाउ सिर्फ URL की बात कर रहा हूँ, इन फ्यूचर वी विल जस्ट वर्क विद द बॉडी पार्ट आल्सो। ओके, सो राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ हम URL की बात कर रहे हैं, तो URL में जितनी भी चीज लिखी है दैट थिंग इज पास्ड टू दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो क्लाइंट के पास से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है आफ्टर दिस सर्वर नेम, सो quiz app t1 equal to something, t2 equal to something and t3 equals to something will be passed to this request. Now I have one more thing, सर ये तो सिर्फ समझ में आ गया अभी, मतलब रिक्वेस्ट के पास अब मैं ऐसे मानूं तो रिक्वेस्ट के पास एक्चुअली काफी सारी चीजें हैं। ओके, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर काफी सारी चीजें उसने दी, बट इफ आई वांट टू जस्ट गेट दिस 10 और इफ आई वांट टू गेट दिस 40 और इफ आई वांट टू जस्ट गेट दिस 50, जो क्लाइंट का इनपुट था मुझे सिर्फ वो चीज चाहिए, तो सो डू यू हैव एनी फंक्शनैलिटी? So let me ask to request sir, do you have any functionality to get this data? और मुझे खुद को इस, देखो ये एक्चुअली स्ट्रिंग टाइप की कोई चीज है, जस्ट चेक। ओके, तो मुझे इसको खुद पार्सिंग करना है कि जहां क्वेश्चन मार्क आया उसके पीछे का डेटा लो, मुझे खुद पार्सिंग करना है और विल इट रिटर्न बाय डिफॉल्ट? ओके, मेरे पास कोई फंक्शनैलिटी है और मुझे इसको मैन्युअली पार्सिंग करना है। आई हैव टू ऑप्शंस। सो फर्स्टली लेट मी आस्क टू दिस रिक्वेस्ट, लेट मी आस्क पाइथन, ओ भाई रिक्वेस्ट का कुछ फंक्शन है तेरे पास? So guys, for that, all of you know कि अगर आप लोग को फंक्शन का लिस्ट पाइथन के अंदर डिस्प्ले करना है, then generally हम ऐसा कुछ लिखते थे, for I in dir of something. So for I, it's nothing but a for loop. So for I in dir of request. So dir of request क्या करेगा? dir function actually returns the bulk of function or list of functions. So मान लो ये रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास 10 फंक्शन है, तो 10 फंक्शन के नाम यहाँ आ जाए। ओके, बट मुझे एक फंक्शन चाहिए था, मुझे सिंगल फंक्शन चाहिए। सो व्हाट आई डिड, मैंने लूप चला दी एंड लेट आई जस्ट प्रिंट दैट। तो मैं इंडिविजुअली एक फंक्शन को प्रिंट करूंगा, आफ्टर को मैं सबसे लास्ट में लूप के बाद। सो नाउ लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पेज एंड लेट मी जस्ट चेक द आउटपुट ओवर हियर। Okay, so this much of things we have, guys. Actually server was abnormally terminated, sorry. Okay, so this much of functions are there. There are lots of things. There are lots of things. अब देखो ना यहाँ before, then this is request object. After that cookies से लेके मेरे पास काफी कुछ available है. Okay, cookies से लेके after तक काफी सारी चीजें available है. So what I want to do actually इसमें काफी सारी special चीज in the sense जिसके पास underscore जो चीज available है. This is not actually like these are common in all the Python objects. Okay, so ये मुझे नहीं चाहिए. So जिसके अंदर underscore है वो मुझे नहीं चाहिए. So what I will do, मैं यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ, if underscore not in I, then please print I, then please print I, otherwise do not print the value of I, otherwise please do not print I. So now let me refresh the, okay, 1 minute. Now let me refresh the, okay, server is refreshed. So now let me refresh our request. Okay, so now let me just check the request. Okay, now these are nothing but in function. Okay, तो इतनी सारी, we cannot say it's a function only. इसके अंदर कोई फंक्शन की जगह क्लास भी हो सकता है। ओके, इसके अंदर कुछ क्लास भी हो सकते हैं। So this much of things we have जो रिक्वेस्ट के अंदर है। ओके, नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? सर माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू गेट दिस t1 t2 t3। मुझे तो एक्चुअली ये t1 t2 t3 चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू गाइस, अगर आपको t1 t2 t3 चाहिए, आपको अगर t1 t2 t3 चाहिए
So what we will do, देखो सबसे पहली चीज हम लोग को आउटपुट में क्या मिल रही है? The first one is cookies. After that there is a files. After that we have actually get. Okay, so I want that get actually. So get actually just used to get the requested data from the client. In short, client जब हम लोग को कोई डेटा पास करेगा ना, दो तरीके से डेटा पास होता है, गेट एंड पोस्ट. क्लाइंट जब हम लोग को डेटा पास करेगा तो दो तरीके से होता है, गेट एंड पोस्ट. ओके, देयर आर मोर देन दिस वे, बट अभी मान लो गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट. सो गेट इन द सेंस व्हाट, जो इस यूआरएल में डिस्प्ले हो रहा है दैट इज एक्चुअली गेट. जो इस यूआरएल में डिस्प्ले हो रहा है दैट इज एक्चुअली गेट. सो मुझे ये गेट वाला डेटा चाहिए. सो गेट के अंदर हम लोग बोले कौन कौन यूआरएल में हमने कौन कौन सी चीजें पास की है. सर t1 पास किया, we passed t2 and we passed t3. हमने तीन चीजें पास की, t1 t2 and t3. ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट t3. तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मैंने t1 and t2 दो चीजें पास की. ओके, सो मुझे वो दो चीज की वैल्यू चाहिए. ओके, मुझे वो t1 और t2 की वैल्यू चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस गेट कमांड. अगर पोस्ट की मदद से पास किया देन यू कैन जस्ट यूज दिस पोस्ट आल्सो. ओके, सो दैट्स अप टू यू कि अपने क्लाइंट से, तो क्लाइंट को हम लोग यूआरएल में डेटा पास करने की परमिशन जनरली नहीं देते, बट अभी हमने HTML फॉर्म्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाया. ओके, तो लाइक वो फॉर्म जब आप बनाते हो तो हम कुछ इस तरीके से टाइप करते हैं, इस तरीके से कुछ मेंशन करते हैं, फॉर्म देन एक्शन इक्वल्स टू लाइक URL कहाँ पे जाना है, एंड देन मेथड इज इक्वल्स टू आइदर गेट और पोस्ट और डिलीट, or you can just write down like head, or you can just write down update, or you can just write down put. But famous are this four. Okay, so generally REST API के लिए भी एक चारों के चारों यूज होते हैं, get, post, delete and put. ये चार मेथड यूज होते हैं. ओके, बाय डिफॉल्ट अगर आप मेथड स्पेसिफाई नहीं करते, जब आप एक्चुअली like 1 minute. So guys, जब आप एक्चुअली फॉर्म डेवलप करते हो HTML में और मेथड स्पेसिफाई नहीं करते, देन बाय डिफॉल्ट मेथड टैग इज एक्चुअली गेट. और गेट की मदद से जितना भी डेटा फॉर्म के अंदर लिखोगे, जैसे फॉर्म के अंदर इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स एंड लाइक ब्ला ब्ला. ओके, सो जो भी चीज यहां से पास करोगे बाय डिफॉल्ट उनका सबका डेटा एक्चुअली यूआरएल से पास होता है. सो इफ यू वांट टू फेच दिस यूआरएल डेटा, देन गाइस अपने पास एक गेट नाम की चीज है inside this request. So I hope right now you are familiar what is the use of this request. So request actually client से जो data आ रहा है उसको fetch करने के लिए काम आता है. Request actually client से जो data आ रहा है उसको fetch करने के लिए काम आता है. Now let me comment all this things जो हम लोगों ने actually checking के लिए use किया. Now मुझे वो data चाहिए. Which data sir you want? Sir I want the data of T1 and T2. मुझे T1 T2 का data चाहिए. So what I will write down? I will write down request dot get. Request dot get. Why request dot get? Because sir I know now get is inside the request. Get it is inside the request. So what I write down? I write down request dot get. Now in square bracket just type T1. So what it returns actually content of T1, and in the same way let I just get the value of T2. And still I am not confident. So what I will do? मैं उन दोनों को सिर्फ print करना चाहता हूँ. What's the value of T1 and what is the value of T2? Okay, so after that we will just apply some logical operation on that. So now that's that. Now let I just restart my server. And let me wait for this one. Okay, so let me refresh this. So just check the output, guys. So we get 10 and 40. We just got 10 and 40. Just 1 second, let me refresh. So just say आप refresh करोगे 1 second, you will get the output. Okay, so here we have 10 and 40. Now one more. अगर मैं यहाँ से data change करूँ, let I just change the data 100 and T2 equal to 450. So let me just run. So here we have 100 and 450. Oh, that's fine. In short, client से जो भी data आ रहा है, still हम लोगों ने HTML forms नहीं बनाए, but मान लो HTML form होता तो उसका data भी इस तरीके से pass होता. So how I pass the data? Sir मैंने data pass किया question mark, and then T1 equal to 100 and T2 equal to 450. But now let us just do one thing. By mistake actually मैंने T2 की जगह double T2 लिख दिया, T2 इस तरीके से कुछ लिख दिया. Okay, and मैंने request place कर. So what will happen? Oh, it throws the exception. What is the exception, sir? It does not know actually T2. It does not know actually T2. So multi-value disk key error, that is actually, sir, it does not know T2. T2 नाम की कोई चीज नहीं पता उसको. So what I have to do, उसके लिए भी मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे कोई डेटा एक्सेप्ट कर रहे हो, and if that key is not available, then it fires the exception. It just generates the exception. So now what is my requirement? My requirement is my requirement is मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि दो इनपुट आएंगे मेरे पास. So now I want to add them. मुझे उनका addition चाहिए.
So just apply a plus b, and okay, now first of all तो मैं addition को print करके देखता हूँ addition हो रहा है कि नहीं. Okay, and now once again मैं यहाँ पे एक्चुअली डेटा पास कर रहा हूँ T1 और T2 का. कुछ प्रॉब्लम्स आएगी और मुझे पता चला ओह नाउ वन मोर प्रॉब्लम है. उसने एडिशन की जगह क्या किया, कॉन्केटेशन किया, मर्ज किया. मुझे तो एडिशन करना था. सो गाइस, क्लाइंट से जो डेटा आपके पास आया वो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है. जो T1 T2 ने जो डेटा दिया इट इज बाय डिफॉल्ट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट. सो व्हाट आई हैव टू डू, अगर आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो देन जस्ट राइट डाउन इंटीजर इन like and मतलब in short just use integer typecasting. Okay, just use integer typecasting, that's it. Now once again just refresh your page, you will just get out 550. So ये 550 actually मुझे यूजर को रिटर्न करना था. So मुझे hello world की जगह आप मैसेज चाहिए addition of your data is and now I want to pass this data. So how to pass? So str of c. What is that str of c? मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना, मुझे क्लाइंट को देना है. So what I write down, I just write down addition is equals to str in the sense मैंने जो आंसर था उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट किया. Now let you check. So here we have addition is equals to 550. Now let me just modify this and just write down 450. So that's addition is actually 4600. Is it clear to everyone? So what you have to do, आपको actually चार अलग-अलग चीजें बनानी है. You have to just define function for addition, subtraction, division and multiplication. ओके और इस तरीके से आपको चारों की रिक्वेस्ट. देखो रिक्वेस्ट मेरी सेम है, यहाँ से क्विज ऐप के लिए रिक्वेस्ट है, तो अब मैं चार फंक्शन को मैनेज कैसे करूँ. नाउ कंसीडर, ये समझ में आएगा इस सब लोग को. ना एक इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट टाइप के लिए वेरिएबल का नाम कुछ गलत लिख दिया देन इट्स मेक एन इश्यू. ओके, सो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपल सी चीज लिखनी है, जो भी मेरा कोड था उसको मैं ट्राई एंड कैच के अंदर पुट करूंगा. सो जस्ट राइट डाउन ट्राई एंड अगर ये सब कुछ सही है, देन जस्ट गो विद दिस वन. और अगर प्रॉब्लम है देन जस्ट राइट डाउन एक्सेप्ट एंड रिटर्न HTTP रिस्पांस एंड यहाँ पे आप पर्टिकुलर वैल्यू लिख दीजिए. ओके, invalid arguments. So if there is an exception then it will work like this. Okay, so now let me refresh our page. So it just written that invalid argument. So आप अपने हिसाब से कुछ डेटा लिख सकते हो, अपने हिसाब से appropriate मैसेज लिख सकते हो. अगर प्रॉपर डेटा हमने दिया, let us just pass T1 and T2, then it returns addition. So that's that. So what we did actually, हमने पहले हमारा first view डेवलप किया था जिसमें सिर्फ hello world प्रिंट किया, and after that हमने request जो भी ऑब्जेक्ट आया था उसको पूरा डिटेल में लर्न किया. So what is actually the meaning of request and how use the request object in a Python code. Okay, उसको कैसे यूज किया जाता है. तो request.get just returns the data passed by the user, okay, or client. So वहां से डेटा मुझे मिला, but the data is always in a string format, so I just type that it in an integer and I just perform some arithmetic task on that and then finally मैंने उसका response generate करके दिया. So now sir, like consider I have two functions. Now consider this is nothing but an addition function. Okay, in the same way I have another function that is subtraction. Guys देखो, जब आप लोग काम करो तो आप कॉपी पेस्ट नहीं करते. Okay, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस करनी है. So that's nothing but in subtraction. Okay, so मुझे यहाँ पे मैसेज देना था, oh that is subtraction and here I want to subtract two value. Okay, so मुझे यहाँ पे subtract करनी थी. Now what is my requirement? अगर आपके पास दो फंक्शन है, if you have two functions then guys you have to map two functions in urls.py. So now what I will do, ये क्विज ऐप के साथ में दो फंक्शन को मैप नहीं कर सकता. पहला फंक्शन का नाम था मेरा एडिशन and second function name is actually subtraction. Second function name is actually subtraction. So मैं दो फंक्शन को एक ही URL के साथ मैप नहीं कर सकता. It makes an issue. So what I'm doing, मैं इसको इस तरीके से मैप करूंगा. This is add and this is subtract. Okay, so मैंने यहाँ पे क्या लिखा, like quiz app slash add, then just go to this quiz app slash subtract, then just open this. Okay, so now let me run this. So now just go to here, quiz app and then just pass T1 and T2. So it returns addition. But ये add की जगह अगर मैंने subtract लिखा होता तो then it just returns subtraction. Okay, तो subtraction. In short, what about this urls.py? जितने भी possible URLs आपको बनाने आपको यहाँ पे. And what about this views.py? जो भी आपकी functionality होगी, जो actually user से data collect करना, perform some task and return the answer, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है. So this is something about your how to create the first view.
So what's your homework? Your homework is actually you have to define 4 different functions for addition, subtraction, multiplication, division. More even guys, you can just define like a max and min type of thing. More even आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप यूजर से string लीजिए and just convert that string in uppercase and return that, lowercase and return that, title case and return that and blah blah. So in short, अगर आप इस views के ऊपर हाथ दिखाना चाहते हो, then just define the functions and perform some tasks.